Yeah, hello everyone. Very good evening to all of you. This is Ashwin Ramani, your research analyst at SBI Securities. I hope I'm audible and I hope you are able to see my screen. अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो. And we'll just wait for a couple of minutes because I see that people are joining in and then we should be good to go with the session. Great. Siddharth Malik ji is here. Okay. जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो. दिनेश जी, गुड इवनिंग. So we'll just wait for a couple of minutes and then we'll start off with the session on PCR today. Deru ji saying hello. So yes, Dinesh ji saying yes, video and audio is clear. Okay, great. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द सेशन, मैं जस्ट बिफोर हम पीसीआर के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर अवेयर ऑफ व्हाट पीसीआर इज? कितने लोग एक्चुअली पीसीआर डेटा को ट्रैक करते हैं? नो, बिफोर ट्रैकिंग द पीसीआर डेटा, कितना लोग जानते हैं कि पीसीआर क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर? अगर आप मुझे एक बार कमेंट करके बता सकते हो चैट बॉक्स पर. Deruji is saying put call ratio. Okay, perfect. So PCR stands for put call ratio. Now, can you all tell me what is put call ratio according to you? Yes, Nikhil ji is also saying put call ratio. But क्या लगता है कि क्या होता है ये put call ratio? Correct. Varun ji is also saying put call ratio here. Super. But what is put call ratio? If you all can again let me know in the chat box. Siddharth ji is saying option data related oversold and overbought. Okay, fair enough. बट ये होता क्या है पुट कॉल रेशियो? वरुण जी सिंह पुट बाय कॉल नहीं, बट क्या होता है लाइक पुट कॉल रेशियो? जैसे हमने पिछले वाले लास्ट वीक में जो वेबिनार लिया था आरएसआई के बारे में, तभी हमने देखा था कि आरएसआई क्या होता है, आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है, कैसे हम आरएसआई डाइवर्जेंस को स्पॉट करते हैं, उसको वहां से हम लोग रिवर्सल्स कैसे ढूंढते हैं. सिमिलरली जैसे हमने वो डिटेल में देखा था, वैसे पुट कॉल रेशियो इज नंबर ऑफ पुट सोल्ड एज कंपेयर टू कॉल सोल्ड. यस, करेक्ट निखिल जी, सुपर. दिनेश जी इज आस्किंग इफ द रेशियो इज हाई इट इज बुलिश, वाइस वर्सा. ओके. वरुण कुमार जी सेइंग imbalance of positions. ओके, परफेक्ट, ग्रेट. आई थिंक मोर और लेस जितना मुझे यहाँ पे रेस्पॉन्स दिख रहा है आप लोग का, उतना मुझे पता चल रहा है कि एटलीस्ट यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट पुट कॉल रेशियो इज. सो आज हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये पुट कॉल रेशियो, आई थिंक आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे निखिल जी ने लिख दिया है कि इट्स नंबर ऑफ पुट सोल्ड एज कंपेयर टू द कॉल सोल्ड. सो विल जस्ट सी व्हाट हाउ डू वी गेट द पीसीआर, कहाँ से हमें ये पीसीआर डेटा मिलता है. Then we will then I'll present to you 4 cases. So there is one concept जो शायद आप लोग ने शायद इसके पहले शायद देखा नहीं होगा या सुना नहीं होगा. एक there is one concept of PCR divergence. तो जैसे एक RSI डाइवर्जेंस है, वैसे ही एक PCR से भी आप एक डाइवर्जेंस देके एक रिवर्सल स्पॉट कर सकते हो. तो उसमें we'll discuss 4 cases in all. एंड वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये पीसीआर डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई कैसे होता है. एंड बेसिस दैट आप फिर डेली उसको ये बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं. एंड देन आई आल्सो हैव अ कपल ऑफ एग्जांपल्स टुवर्ड्स द एंड, जो निफ्टी में जब भी हमें पीसीआर डाइवर्जेंस मिला था निफ्टी के चार्ट पे, डेली चार्ट पर, तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड देन टुवर्ड्स द एंड हम लोग मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा ताकि आपको एकदम पूरा क्लैरिटी मिल जाए. ठीक है. So let us start off with the session. So first we will discuss what is PCR. Then we will discuss the interpretation of PCR. Then with the help of 4 cases हम लोग देखेंगे कि PCR divergence क्या होता है.
and then I'll show you with the help of examples कि आप कैसे एक रिवर्सल की आप एक अंदाजा लगा सकते हो with the help of PCR divergence. ठीक है, so this is going to be our agenda for the next 40-45 minutes. So let us start off with what is PCR. जैसे आप लोग ने correctly कहा, it is calculated by dividing the open interest of put options by the open interest of call options. Now, can anyone tell me what is the meaning of open interest here? कितने लोग open interest के बारे में जानते हैं? आप मुझे अगेन एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो. आपने पीसीआर तो यू हैव राइटली कॉल्ड इट आउट. पीसीआर स्टैंड्स फॉर पुट कॉल रेशियो. इट इज डिवाइडेड. जो पुट साइड का अगर आपने ऑप्शन चेन देखा होगा, देयर इज कॉल साइड. कॉल लेफ्ट साइड में होता है, पुट इज ऑन द राइट साइड. देन देयर आर लाइक फ्यू कॉलम्स यू वुड हैव सीन इन एन ऑप्शन चेन. अभी हम लोग देखेंगे ऑप्शन चेन को. एक ओआई कॉलम होता है, एक चेंज इन ओआई कॉलम होता है, फिर एक आईवी कॉलम होता है, फिर एक लास्ट ट्रेडेड प्राइस का कॉलम होता है. उसमें से जो ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड का और कॉल साइड का, एकदम अगर आप नीचे जाओगे ऑप्शन चेन का, वहां पे आपको टोटल ओपन इंटरेस्ट दिखेगा. सो पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे कॉल के ओपन इंटरेस्ट से, और तब जाके हमें मिलेगा पीसीआर. Like coming back to my original question, what is open interest? Yes, Nikhil ji is saying open contracts. Yes. So these are nothing but your outstanding positions. मतलब वो contracts जो कि आपने मान लो आपने कोई contract लिया हुआ है और वो जो position है वो अभी भी open है, आपने उसको close नहीं किया, you have carry forwarded their position to the next day. तो जब भी आप कोई पोजीशन क्रिएट करते हो और वो पोजीशन ओपन रहता है या वो आउटस्टैंडिंग रहता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ओपन इंटरेस्ट. और जब आप वो पोजीशन को क्लोज कर दोगे तो आपका ओपन इंटरेस्ट ओपन नहीं रहेगा, वो कम होते जाएगा. और जैसे जैसे आप पोजीशंस बढ़ाते जाओगे, योर ओपन इंटरेस्ट विल कीप गोइंग अप. इट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. दिनेश जी, परफेक्ट. सो व्हाट इज पीसीआर? नाउ पीसीआर एक इंडिकेटर है जो आपको मार्केट सेंटिमेंट के बारे में बताता है. अभी पिछले हफ्ते जब हमने ऑप्शन चेन के बारे में देखा था कि ऑप्शन चेन से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक लेवल है जो एक रेजिस्टेंस हो सकता है और कौन सा एक लेवल है जो सपोर्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो कौन से स्ट्राइक पे. तो हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था हम लोग ऑप्शन चेन को कौन से पर्सपेक्टिव से देखते हैं. डू वी लुक एट ऑप्शन चेन फ्रॉम अ बायर्स पर्सपेक्टिव और डू वी लुक एट ऑप्शन चेन फ्रॉम अ सेलर्स पर्सपेक्टिव? इफ यू कैन कमेंट इन दी चैट बॉक्स कि हम लोग ये जो ऑप्शन चेन एनालिसिस जो हम करते हैं, जब आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में एक ओपन इंटरेस्ट है, सिमिलरली पुट साइड में भी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में काफी सारे ओपन इंटरेस्ट होते हैं. बट ये जो ओपन इंटरेस्ट है, हाउ डू वी इंटरप्रेट दैट? डू वी सी दिस ऑप्शन चेन फ्रॉम अ राइटर्स पर्सपेक्टिव or do we look at this option chain from a buying perspective? Yes, correct. Dinesh ji and Siddharth ji is saying हम लोग ये इसको राइटिंग पर्सपेक्टिव से देखते हैं. सो ऑन दी कॉल साइड यू हैव कॉल राइटिंग. सो कॉल राइटिंग मतलब बेयर्स, दे एक्सपेक्ट द मार्केट टू रिमेन साइडवेज और टू गो डाउन. And similarly, put writing means the presence of bulls. They expect the market to remain sideways or go up from here. तो हम लोग जब भी ऑप्शन चेन देखेंगे, वी हैव टू इंटरप्रेट दैट फ्रॉम अ राइटिंग पर्सपेक्टिव. ठीक है, और इससे हमें एक मार्केट सेंटिमेंट का अंदाजा मिलता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कॉल राइटर्स पुट राइटर्स से ज्यादा है, माने बेयर्स आर मोर इन नंबर्स एज कंपेयर्ड टू बुल्स, या पुट राइटर्स कॉल राइटर्स से ज्यादा है. सो दिस इज व्हाट वी विल कम टू नो विद द हेल्प ऑफ पीसीआर. तो जब आप ये जो पुट ओपन इंटरेस्ट है, दैट मींस बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज आप देख रहे हो कि पुट राइटिंग डिवाइड बाय कॉल राइटिंग. जब आप पुट ओपन इंटरेस्ट मींस पुट राइटिंग, कॉल ओपन इंटरेस्ट मींस कॉल राइटिंग. जब आप पुट राइटिंग बाय कॉल राइटिंग करते हो, यू विल गेट अ नंबर. अब वो नंबर या तो 1 होगा, या तो 1 के ऊपर होगा, या तो 1 के नीचे होगा. सो लेट्स से व्हेन यू डिवाइड पुट ओआई बाय कॉल ओआई और आपको एक नंबर मिलता है 1, दैट मींस पीसीआर जब 1 होता है, इट इंडिकेट्स व्हाट कि जो सेंटिमेंट है वो एकदम न्यूट्रल है. दैट मीन देयर इज एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग हियर. मतलब पुट राइटिंग भी उतने इक्वल है एज कंपेयर टू कॉल राइटर्स हियर. सो व्हेन पीसीआर इज क्लोज टू 1, सो मे बी यू कैन एक्सपेक्ट कि शायद मार्केट एक साइडवेज चल सकता है फॉर दैट पर्टिकुलर डे. मान लो अगर जो आपका पीसीआर है वो 1 के ऊपर है, सो मतलब इफ द पीसीआर इज मोर देन 1, कैन एनीवन टेल मी व्हाट डज दैट मीन? अगर हम पुट राइटिंग बाय कॉल राइटिंग करके जो पीसीआर का फिगर जो आएगा, इफ इट इज मोर देन 1, डज दैट मीन कि वो सेंटिमेंट बुलिश है? इज देयर मोर प्रेजेंस ऑफ बुल्स देन बेयर्स, और
does that mean there is higher presence of bears than bulls when PCR is more than 1? Again, you can comment in the chat box and you can, give me your answers, and wrong answers are completely fine. I mean, you don't have to hesitate, to type out anything in the chat box. So अगर PCR मान लो 1 के ऊपर है, वो क्या सेंटिमेंट दर्शाता है? वो बुलिश सेंटिमेंट दर्शाता है या वो बेरिश सेंटिमेंट दर्शाता है? So when you do put writing, Siddharth is saying bears are more, okay. Nikhil ji is saying more than one is bullish. Call writers are in a strong position. मान लो put writers 100 है, for example, और call writers 50 है. So when you do 100 by 50, you get an answer as what? 2. Now put writing is 100, call writing is 50. So who is stronger here? Put writers are stronger, put writers are more. So therefore क्या sentiment बनता है? Bullish sentiment बनता है या bearish sentiment बनता है? Can think logically. ये example से मान लो कि put writing for example 100 है, call writing is 50. So when you do 100 by 50, आपको क्या आएगा? Answer 2. So put writing is more than call writing. So put writers are more. Exactly. Dinesh ji is saying bullish. Sandeep ji is saying bullish. Perfect. So जब 1 के ऊपर है, it indicates कि put writing ज्यादा है call writing से, and it indicates a bullish sentiment. Similarly, अगर 1 के नीचे है, let's say the PCR is less than 1, can I say it will indicate a bearish sentiment? Because मान लो अगर आपका put writers है सिर्फ 50 और आपका call writers है 100. So when you do 50 by 100, you'll get what? 0.5. So जब आपका 50 by 100 0.5, then that means the sentiment in the market is bearish. Is this basic understanding of PCR clear? If you can give me a heads up in the chat box. What number ratio is generally considered overbought? See, there is no particular number for identifying कि ये overbought है या oversold है. Ideally, we have seen, PCR might peak out at 1.4, 1.5, कब वो 1.6, 1.7 भी चला जाता है. When जब भी हम लोग बोलते हैं कि वो extremely अब overbought है. Indication of a bearish sentiment here. All good until now. If you can let me know in the chat box. ठीक है. Now, before we go to the divergence part, सबसे पहले हो सकता है कि काफी लोग के लिए पुट कॉल रेशियो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफी न्यू है. सो मैं आपको पहले एक बार एनएससी इंडिया के ऑप्शन चेन में जाके पहले हम लोग देख लेते कि अभी का पीसीआर क्या है. सो राइट नाउ द मार्केट इज क्लोज्ड फॉर 21st of May. सो वी विल गो टू एनएससी इंडियाज ऑप्शन चेन और वहां से हम लोग देखेंगे कि पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट क्या है और कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट क्या है, एंड देन वील सी व्हाट द करंट पीसीआर इज. तो जैसे हमने देखा यहाँ पे फॉर्मूला इज open interest on the put side divided by the open interest on the call side. So now let me go to my NSE India website. Are you all able to see my screen here? क्या सभी लोग को यहाँ पे option chain का website दिख रहा है? So you can go to NSE India option chain. So I've selected. So कल निफ्टी का expiry है 22nd May. और यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज योर कॉल साइड, राइट हैंड साइड इज योर पुट साइड, एंड यहाँ पे यू कैन सी देयर आर डिफरेंट कॉलम्स. देयर इज ओआई, चेंज इन ओआई, वॉल्यूम, आईवी, एलटीपी इज योर लास्ट ट्रेडेड प्राइस. Then you have the bid quantity, bid price, ask quantity, and the ask price here. And at the center of the option chain, you have different strikes, and the same columns are there on the put side as well. सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें पुट ओआई लेना है. सो आई विल गो टू द पुट साइड हियर ऑन द राइट हैंड साइड, एंड यू हैव टू फोकस ऑन दिस ओआई कॉलम, जो लास्ट कॉलम है ऑन द पुट साइड एंड द फर्स्ट कॉलम ऑन द कॉल साइड हियर. यहाँ पे जाएंगे, लेट्स गो डाउन एंड लेट अस सी व्हाट द फिगर इज. कैन एनीवन हेल्प मी टाइप आउट द फिगर इन द चैट बॉक्स कि आपको पुट ओआई का जो टोटल फिगर है वो आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ माई स्क्रीन.
So can you all see it is 17,63,231. So I'll write 17,63,231. So this is my put OI. Clear? 17,63,231. अब हम जाते हैं कॉल साइड पे. So call side पे you can see it is 27,22,310. So call side पे 27,22,310. So जो पहला वाला था वो आपका पुट OI है. The second one is your call OI. Clear? So put OI एकदम आपको बॉटम पे आना है 17,63,231 और यहाँ पे आपका है 27,22,310. Now all you have to do is just divide the call OI by your put OI. Sorry, you have to divide put OI by the call OI. And इसको अगर चाहिए तो आप 2 decimals में कर सकते हो. So let me put it this way. So what is the current PCR, guys? If you all can let me know in the chat box. तो हमने सबसे पहले यहाँ पे put OI select किया on the right hand side. फिर हमने call OI select किया यहाँ पे. So put writing is around 17,63,000 and call writing is around 27,22,000. So when I do 17,63,000 by 27,22,000, I get my PCR as 0.65. Now, what does that indicate, guys? If you all can just comment in the chat box. Basic क्या लग रहा है? Base अगर market sentiment के बारे में आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना है, just basis the PCR. Great. Nikhil ji saying 0.65 is bearish. Clearly आपको दिख रहा है कि call writing ज़्यादा है as compared to the put writing here. It is 0.65. But सिर्फ 0.65 देके हम लोग कुछ decision नहीं ले सकते. Like I said, आपको PCR एक relative basis पे देखना होता है, not on any standalone basis here. But is the PCR calculation clear? Understood how do we get the PCR? और आप ये next expiry के लिए भी कर सकते हो. So for example, ये तो हमने 22 मई का expiry के लिए देखा था. वैसे मान लो अगर आपने 29 जो आपका मंथली expiry है, आप 29th में expiry में जाते हो और आप देख रहे हो यहाँ पे पुट साइड में the OI is around 10,12,000 and यहाँ पे it is around 10,34. You see almost PCR is very close to 1. So if you do 10 by 12 divided by 1034, तो आपका जो PCR है वो एकदम close to 1 आ रहा है. But ideally, let's say we focus on the current expiry year और इससे हमें ये पता चल रहा है कि आपका जो PCR है that is 0.65. Dinesh ji is saying 0.64. Correct. All good until now, guys. If you can give me a heads up in the chat box, समझ में आया ये PCR कैसे कैलकुलेट होता है and उसका क्या बेसिक इंटरप्रिटेशन हम करते हैं PCR का. Because even the previous session a lot of people had commented saying they are not aware of these terms like जैसे PCR हो, किसको ऐसा कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है. But I hope that part is clear now. All good. Can we move to the next topic? Great. Sachin ji is saying yes. Okay, super. Sure. Now let us discuss, now that you are aware of what PCR is, now let us go and discuss these 4 cases now. Can you all see my Excel? If you can comment in the chat box. Dinesh ji is saying yes, negative sentiment as on today. Perfect. If you can see my Excel एक बार chat box में. So अभी हम लोग क्या करेंगे, आपको मैं 4 cases we will discuss, all individual cases. एंड देन आपको इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पीसीआर रिलेटिव बेसिस पे कैसे देखना है. ठीक है. नाउ लेट अस सी केस नंबर 1. सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट आपको सिर्फ पीसीआर ही नहीं देखना है, उसके साथ साथ आपको निफ्टी के प्राइस मूवमेंट भी आपको साथ में कंपेयर करना है. नाउ लेट्स लुक एट केस नंबर 1 हियर. तो यहाँ पे मैंने 2 कॉलम्स बनाए. वन इज योर प्राइस. सो when I say price, हम लोग we are considering the closing prices of that particular day. So we are not taking any open price or high price or low price. It's the closing prices that matter. तो ये जो price है that will be your closing price here. तो यहाँ पे price है and my the second column है वो है PCR. यहाँ पे मैं सिर्फ एक hypothetical figures यहाँ पे मैं लिया हूँ. But आपको जो daily जो PCR है उसके साथ आपको compare करना होगा. ये बस आपका understanding sake के लिए I have taken these examples here. Clear? Okay. Now let's say on day 1 the Nifty's closing price is at 25,000. ठीक है. निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस 25,000 है और उस दिन आपका जो पीसीआर है वो 1.3 है.
So 1.3 है PCR means obviously अगर Nifty है there is more put writing as compared to call writing because PCR is more than 1. So this is what you see on day 1 जहाँ पे Nifty का closing price is 25,000 and the put call ratio is 1.3. Let's say you come to day 2. Day 2 में क्या हुआ है? Nifty 25,000 से बढ़कर आ गया 25,200. Now can anyone tell me what has happened to the closing price here? क्या हमें कल से ज्यादा ऊपर क्लोजिंग मिला है या कल से नीचे क्लोजिंग मिला है? If you can comment in the chat box. कल निफ्टी का प्राइस 25,000 था जहां पे पीसीआर था आपका 1.3. नेक्स्ट डे निफ्टी बढ़कर ऊपर चला गया 25,200. दैट मीन्स कैन आई से निफ्टी हैज गॉन अप. जब नेक्स्ट डे निफ्टी 25,200 चला गया था उस दिन पीसीआर जो पिछले दिन 1.3 था वो बढ़कर हो गया 1.5. मतलब इफ यू सी दैट पीसीआर इज मूविंग इन टैंडम विद द निफ्टीज क्लोजिंग ईयर. निफ्टी ऊपर जा रहा है, पीसीआर भी ऊपर जा रहा है. दैट मीन देयर इज मोर प्रेजेंस ऑफ बुल्स एज कंपेयर्ड टू द बेयर्स. सो यहाँ पे आप लिख सकते हो द निफ्टीज प्राइस हैज गॉन अप एट द सेम टाइम योर पीसीआर हैज आल्सो गॉन अप. डू यू सी एनी डाइवर्जेंस हियर? कुछ ऐसा डिविएशन दिख रहा है? डिविएशन इन द सेंस मान लो प्राइस एक तरफ गया और आपका पीसीआर जो है दूसरी तरफ गया है. डू यू सी एनी काइंड ऑफ डाइवर्जेंस हियर? इट्स सिंपल राइट. अभी निफ्टी 25,000 से 25,200 गया. सो वी आर लुकिंग एट रिलेटिव बेसिस. हम लोग आज का डेटा कल के डेटा से कंपेयर करते हैं. सिमिलरली यू कैन लुक एट लास्ट 3-4 डेज डेटा एज वेल. ऐसा जरूरी नहीं कि कल के डेटा और आज के डेटा को ही आपको कंपेयर करना है. मे बी यू कैन लुक एट पास्ट 3-4 डेज डेटा. 3 डेज का डेटा हो गया या 4 दिन का डेटा हो गया या पूरा एक हफ्ते का डेटा हो गया. एंड ऐसे आप रिलेटिवली देख सकते हो पीसीआर का क्या मूवमेंट है. निफ्टी 25,000 से 25,200 निफ्टी द प्राइस हैज गॉन अप. एट द सेम टाइम पीसीआर जो 1.3 था अगले दिन हो गया 1.5. मतलब निफ्टी भी ऊपर गया, पीसीआर भी ऊपर गया. देयर इज नो डाइवर्जेंस हियर. इट्स बोथ प्राइस एंड पीसीआर इज मूविंग इन टैंडम. नाउ लेट्स कम टू केस नंबर 2. नाउ फोकस ऑन केस नंबर 2 हियर. डे 1 निफ्टी का प्राइस था 25,000 और पीसीआर उस दिन था 1.1. डे 2 निफ्टी का प्राइस 25,000 से गिरकर आ गया 24,800. पहले केस में हमने देखा था निफ्टी का प्राइस 25,000 से 25,200 हो गया. यहाँ पे क्या हो गया? 25,000 से अगले दिन निफ्टी का प्राइस गिरकर आ गया 24,800. जब 25,000 था कल पीसीआर था 1.1. आज जब 24,800 हो गया नाउ द पीसीआर हैज कम टू 0.9. What is the interpretation here? प्राइस कल से गिरा या ऊपर गिरा? ऊपर गया, गिरा यहाँ पे. So the price is down. At the same time your PCR is down as well. कल जो PCR 1.1 था वो गिरकर आ गया 0.9 और कल जो प्राइस 25,000 था वो गिरकर आ गया 24,800. Again, do you see any divergence here between the price and the PCR? If you can just comment in the chat box. कुछ divergence? The price dropped in spite of bullish sentiment case 2. No, there is absolutely no divergence because price भी गिरा है. At the same time आपका जो PCR है वो भी गिरा है यहाँ पे. So there is absolutely no divergence here. So that was case number 2. Now let's focus on case number 3. Now things will get more interesting. This is what you need to understand. इससे आपको case 3 and case 4 से आपको पता चल जाएगा कि आप divergence कैसे देख सकते हो. Let's say डे 1 द निफ्टी का जो प्राइस है वो 25,000 है. उस दिन आपका जो पीसीआर है वो है 1.3. नेक्स्ट डे आपका जो प्राइस है वो तो बढ़ गया, 25,000 से 25,200 चला गया. सो आइडियली योर प्राइस हैज गॉन अप. मतलब क्लोजिंग बेसिस पे हम देख रहे हैं जो 25,000 का जो प्राइस था अगले दिन वो बढ़कर हो गया 25,200. योर प्राइस हैज गॉन अप योर. बट लुक आइडियली पीसीआर क्या होना चाहिए था? जब प्राइस अगर बढ़ा है 25,000 से 25,200 आइडियली व्हाट शुड हैव हैपेंड टू पीसीआर? पीसीआर भी बढ़ना चाहिए था. जैसे हमने केस 1 में देखा 1.3 से 1.5 हो गया. बट व्हाट इज हैपेंड हियर? इफ यू कैन टेल मी. यहाँ पे 25,000 से 25,200 तो हो गया बट पीसीआर बढ़ने के बजाय पीसीआर यहाँ पे घट गया. 1.3 से हो गया 1.1. सो योर द प्राइस हैज गॉन अप but your PCR has come down. मतलब it basically means the put writers are kind of squaring off their position. मतलब ऊपर कौन लेके जाएगा? पुट राइटर्स ही अपना पोजीशंस को ऊपर लेके जाएंगे. बट पुट राइटर्स आर नॉट दैट अग्रेसिव जितना प्राइस उतना ऊपर क्लोज हुआ है. सो हियर वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे एक हमें पीसीआर नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है.
इज दिस पार्ट क्लियर? अंडरस्टूड गाइज व्हाट इज अ नेगेटिव डाइवर्जेंस? कि आइडियली जब प्राइस बढ़ा तो पीसीआर भी बढ़ना चाहिए था, बट यहाँ पे प्राइस बढ़ा बट यहाँ पे आपका पीसीआर क्या हो गया, वो घट गया यहाँ पे. सो व्हेन दिस हैपेंस, अगर यहाँ पे हम लोग बस 2 दिन का कंपैरिजन कर रहे हैं, व्हेन द प्राइस गोज अप द पीसीआर हैज कम डाउन, it basically means there is a negative divergence here. And ideally what this means guys, अगर ये negative divergence आपका PCR ही negative हो रहा है यहाँ पे, then what is the interpretation of that? Can anyone tell me? तो इससे आप क्या एक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप 25,200 से निफ्टी का प्राइस और ऊपर जाएगा, या थोड़ा सा हमें साइडवेज टू कंसोलिडेशन या एक थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, या दोज आर टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो प्राइस इज डिराइव फ्रॉम डिमांड एंड सप्लाई, वहां से आपका प्राइस ये होता है. पीसीआर इज बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट हियर, द नंबर ऑफ ओपन पोजीशंस ऑन बोथ द कॉल साइड एंड द पुट साइड. सी आइडियली प्राइस बढ़ा तो पीसीआर भी बढ़ना चाहिए था, बट यहाँ पे पीसीआर बढ़ा नहीं, पीसीआर घट गया. सिमिलरली जैसे आरएसआई में कैसे बोलते हैं यहाँ पे, द प्राइस हैज मेड अ हायर हाई, बट आरएसआई हायर हाई नहीं बना रहा है, आरएसआई एक लोअर हाई बना रहा है. सो दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ डाइवर्जेंस. चांसेस आर दैट ये प्राइस और ऊपर नहीं जा सकता है, मे बी देयर कैन बी सम करेक्शन दैट कैन बी expected here. Okay, am I audible now? Am I audible now, guys? If you can just confirm in the chat box. Okay, great. For calculating PCR, how many strikes? We are not looking at particular strikes, Varunji. We are just looking at the consolidated PCR across all the strikes, मतलब combined strikes का. ठीक है, audible. Okay. So we were discussing case number 4 here. So let's say on day 1 the price is 25,000 and the PCR is 1.2. अगले दिन क्या हो गया, निफ्टी का जो प्राइस है वो गिरकर आ गया 24,800, मतलब प्राइस नीचे चला गया. तो जब प्राइस नीचे जाता है आइडियली व्हाट शुड हैव हैपेंड टू पीसीआर, पीसीआर भी घटना था, बट यहाँ पे क्या हो गया, पीसीआर को 1.2 हैज गॉन टू 1.4. हियर द पीसीआर हैज गॉन अप. नाउ can you all spot a divergence here? So this is nothing but your PCR bullish divergence. मतलब the price is making a lower lows, but the RSI is making a higher lows here. Third one, please explain again. Yes, sure. See, if you look at case number 3, so I'll repeat case number 3 and case number 4 again. केस नंबर 3 में क्या हुआ, डे 1 में आपका प्राइस था 25,000, उस दिन आपका पीसीआर था 1.3. अगले दिन क्या हो गया, आपका जो प्राइस है वो 25,000 से बढ़कर हो गया 25,200. सो कैन आई से द प्राइस हैज गॉन अप. 25,000 से 25,200 गया, मतलब प्राइस तो ऊपर गया. अब आइडियली प्राइस ऊपर गया तो पीसीआर भी साथ साथ ऊपर जाना चाहिए था. दिस 1.3 should have come to 1.5. It should have been higher than the previous day. But what has happened is, instead of going higher, the PCR has fallen from 1.3. It has come to 1.1. When the price has gone up, the PCR has actually kind of gone down here, which is hinting towards a negative divergence. Is this case number 3 clear now? I think somebody had a doubt for the third case. And similarly, when I look at case number 4, मान लो कल 25,000 था और पीसीआर आपका 1.2 था. यहाँ पे क्या हो गया, 25,000 से प्राइस घट गया और आ गया 24,800 पे. सो यार प्राइस हैज गॉन डाउन.
आइडियली जब आपका प्राइस घटा है तो आपका पीसीआर भी घटना चाहिए था. योर पीसीआर शुड आल्सो हैव फॉलन. दिस 1.2 should have gone below 1, or it should have been 1.1 or 1 or 0.9. But when the price has gone down, your PCR has gone up. वो 1.2 से 1.4 चला गया. Basically think your price is making a lower low, whereas your RSI is making a higher low. Similarly, the price has gone down, but your PCR has gone up, and that has led to a bullish divergence. Exactly. So अगर negative divergence है where price ऊपर गया PCR नीचे, then you expect the market to maybe take a breather and come down. और जब प्राइस आपका नीचे गया और आपका पीसीआर थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, चांसेस आर दैट द मार्केट माइट टेक सपोर्ट and might slightly consolidate or move up from there. Are these four cases clear, guys? If you can just confirm in the chat box. Got the concept of what a PCR divergence is? How many of you all were actually aware of something like this? PCR divergence कितने लोग को मालूम था कि ऐसे भी एक PCR divergence का concept होता है? Maybe you would have seen PCR in isolation कि हाँ ठीक है कल 1.3 है, 1.4 है, 1.5 है या 1 के. Basic interpretation is if it goes to 1.4, 1.5 it's overbought, or if it goes to 0.4, 0.3 it's oversold. But try to look at PCR divergence. Now, when I show you an example, it will be another eye opener for you. I'll tell you when to look for these PCR divergence signals. Now, we will also combine PCR with RSI overbought and oversold as well. Clear? Okay. So now let us look at some examples now. So now that the concept is clear, let's see if you are able to गेट द कॉन्सेप्ट. ये लोग चार्ट के साथ देखेंगे तो और आपको क्लैरिटी आ जाएगा पीसीआर डाइवर्जेंस के ऊपर. ओके, कैन एवरीवन सी माय निफ्टी चार्ट ऑन द स्क्रीन? If you can just let me know in the chat box. So the first example that I am taking is अच्छा, बिफोर आई गो टू द एग्जांपल, आपको ये डेली पीसीआर कहाँ से मिलेगा? सी वन थिंग इज, आप जैसे ही मार्केट क्लोज होता है आप ऑप्शन चेन में जाके डेली आप एक एक्सेल शीट आप मेंटेन कर सकते हो कि कल का क्या हुआ ही था, आज का क्या हुआ है, एंड व्हाट इज द पीसीआर. सो थोड़ा सा मेहनत वाला काम है कि आपको डेली ऑप्शन चेन में जाके यू हैव टू जस्ट जॉट डाउन द पीसीआर. Secondly, what you can do is we release a market scanner every day in the morning. So वहाँ पे we mention the PCR levels. So if you don't want to calculate it by yourself, you can go to our Twitter channel, subscribe to our Twitter channel where we upload our market scanner, and वहाँ से आपको PCR मिल जाएगा. Thirdly, there is one other website that you can use. How many? I think I'm pretty sure you all are aware of Opstra. So right now I'm not able to open my Opstra here. Okay, let me just try it again. Okay, there is some error that I'm facing here in Opstra, but अगर आप Opstra में जाओगे, so there you will get daily PCR as well. So वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो. Yes, should I consider? Dinesh ji is asking, should I consider all the strikes? Yes, Dinesh ji. So you have to take the consolidated figure. No, not for any particular strike. आप ये यहाँ पे आप देखोगे ना, ऐसा कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक का नहीं. ऑप्शन चेन में जाके ये जो ओवाई कॉलम है ना, एकदम से बॉटम में जाके यू हैव टू टेक द टोटल फिगर ऑफ दिस एंड द टोटल फिगर ऑफ दिस ईयर. सो पुट ओवाई बाय कॉल ओवाई. वी आर देयर बाय एसबीआई सिक्योरिटीज ओनली, सचिन जी. ठीक है. ओके, नाउ लेट अस कम टू द एग्जांपल हियर. नाउ let us see the example here. Now let us understand PCR divergence with the help of charts. ठीक है. जो सबसे पहला एग्जांपल में जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है 3rd and 4th मार्च को. सो हियर यू कैन सी द क्लोजिंग प्राइस. ये निफ्टी का डेली चार्ट है. एट द बॉटम ऑफ माय स्क्रीन यू कैन आल्सो सी द आरएसआई हियर. सो द रेड लाइन इज 30. That is below 30 we consider it oversold, and the blue line is 70. So above 70 we usually consider it as overbought. So here you can see 3rd or 4th March को क्या हुआ था. I'm talking about this particular red candle and this particular green candle here. That means ये जो 3rd March का closing था
और ये जो 4th मार्च का क्लोजिंग है, those are the 2 days that I am considering here. Now can anyone tell me why have I just considered only 3rd and 4th March? Let's see who can take a wild guess. Yes, market scanner from SBI. So we release a market scanner every day in the morning. It comes between 8 to 8:30. So you will find that market scanner on our Twitter channel, Rhythmji. Now can anyone tell me why have I just considered 3rd and 4th March? Because यहाँ से मुझे एक easily एक reversal दिख रहा था, इसके लिए मैंने सिर्फ यही point select किया. You could have argued I could have selected this point as well. I could have selected this low as well, or I could have selected this low as well. But why in particular did I select only this 3rd and 4th March here? Just because I could see a good reversal happening, इसके लिए मैंने easy way में ये कर दिया. I think there is one reason why I have selected that 3rd and 4th March. ये निफ्टी का डेली चार्ट है. Sachin ji is saying oversold zone. Yes, Siddharth ji is also saying exactly. Look at the RSI, guys. So RSI has gone below 30, especially between on 3rd of March. Can you see that RSI has gone below the 30 mark here? मतलब ये already एक oversold territory में चला गया है. That is the time when you should start hunting for these divergence, because यहाँ पे आपको RSI divergence तो नहीं दिख रहा है, but आपको एक indication RSI दिखा रहा है कि ये शायद oversold है. And let me open up the chart here now. If you look at the 3rd March close, अच्छा चलो मैं आपको chart से ही दिखा देता हूँ यहाँ पे. So we are looking at 3rd and 4th March. So let me go and let me open. I don't know why is my Nifty is also not working here. I think there is some issue with my system. Okay, let me show you with this chart only then. Now, if you see 3rd March, now 3rd March का अगर हम लोग close देखेंगे, so here you can see the closing price here. So this is the open price, high price, low price, and the close price. Now, if we see the closing on the 3rd of March, the close was 22,119, right? And on the 4th of March, when Nifty bottomed out here, at the same time, my RSI had gone below 30. So I was little cautious here कि 30 के below है मतलब oversold है. So हो सकता है कि शायद यहाँ से एक reversal का chances मिले. So that is one indication. Now I'm also looking at PCR. यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कल का close था 22,119. And on the 4th as well, my close was 22,083. Now, जब मैं 3rd और 4th को कंपेयर कर रहा हूँ, what can I see here, guys? 4th को जो क्लोजिंग है वो 3rd के क्लोजिंग से नीचे है, या जो 4th का जो क्लोजिंग है वो 3rd के क्लोजिंग से ऊपर है. What is it that you see when you compare 3rd and 4th March का closing prices here? And at the same time, you see that the RSI has gone below 30. Even when Nifty made this low, RSI was above 30. When this low was made, it was above 30. The other low that you can see is you can also see this low as well. जहाँ पे ये वाला जो reversal आया था, you could have also seen between November and December when RSI had gone below 30, you could have even checked for some kind of RSI divergence here. So ideally 22,119 और अगले दिन जो क्लोज हुआ है वो 22,083 है. So can I say ideally मेरा जो क्लोजिंग है वो लोअर लो है, मतलब जो सेकेंड डे का क्लोजिंग है that is lower than the previous day's closing. So ideally PCR क्या होना चाहिए? Can I say PCR में भी सेम ट्रेंड दिखना चाहिए? अगर कल मान लो PCR 0.5 है तो अगले दिन PCR 0.4 होना चाहिए, राइट? बिकॉज अगर प्राइस गिरा है तो PCR भी गिरना चाहिए. Do you all agree? If you can let me know in the chat box. Now you can see here. So what I have done is ये Obstra का screenshot है. So here you can see this is my 3rd March 2025 and this is my 4th March 2025, and here you can see PCR 5 SMA means they also look at moving average, but there is this one black color line that moves in. So on 3rd of March, my PCR was 0.791. I'm not sure if you are able to see it well, but if you look at 3rd March ka PCR, when the price was 22,119, the PCR was 0.79. And next day when the price was 22,083, जब price गिर गया था, so ideally ये जो PCR है वो 0.79 से और नीचे जाना था, but next day the PCR came at 0.85. So you can see on 4th of March the PCR has come at 0.85,
the price has given a lower close, whereas the PCR has given a higher close here. So 0.79 था, price तो गिरा, but PCR ऊपर चला गया. Now, can anyone tell me what kind of divergence is this? Is this a bullish divergence or is this a bearish divergence? If you can give me a heads up in the chat box. From 22,119, next day the price came to 22,083. And next day you can see मेरे को एक lower close मिला. At the same time when I see that the daily RSI has gone below the 30 mark, मतलब एक ओवरसोल्ड है. तो जब जब ओवरसोल्ड आता है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद यहाँ से एक बॉटम आउट करके हमें एक ऊपर की तरफ प्राइस जाते हुए नजर आए. नाउ व्हेन आई एम लुकिंग एट द पीसीआर, जब प्राइस गिरा है तो आइडियली पीसीआर और भी गिरना चाहिए था. जो 3 मार्च को जो पीसीआर था 0.79, आइडियली नेक्स्ट डे 0.7 होता है या 0.65 होता है या 0.6 होता है, कम होता. बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पीसीआर गिरने के बजाय यहाँ पे बढ़ गया है. फ्रॉम 0.79 इट हैज गॉन टू 0.85. So that's a clear case of a bullish divergence. And next day, what has happened on 5th of March? You can see there is a big higher close that we get here. Now, when you combine all these three things together, RSI being in oversold, you getting a lower close, PCR indicating a bullish divergence, and now you see a higher close on Nifty's daily chart as well. What kind of pattern do you see here forming on Nifty's daily chart? अब आपने आरएसआई का भी यूज कर दिया, आपने पीसीआर डाइवर्जेंस का भी कॉन्सेप्ट यूज कर दिया, आपने अभी कैंडल स्टिक. नाउ लुक एट द प्राइस एक्शन एज वेल. सो नाउ व्हेन यू सी, आइडियली यू आर एक्सपेक्टिंग कि नाउ द निफ्टी माइट मेक अ बॉटम एंड इट विल गो अप. ऐसा जरूरी नहीं कि हर टाइम जब भी डाइवर्जेंस मिले हमें बॉटम मिले ही. ठीक है, इट्स नॉट दैट एवरी टाइम यू गेट अ डाइवर्जेंस यू विल गेट अ बॉटम. बट इफ यू आर लुकिंग एट 2-3 थिंग्स टुगेदर and the price action is also justifying the same, then आपका conviction बड़ा हो सकता है. अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो 3 बार है, you can, it kind of looks like a morning star pattern. You can see there is red, there is a small green, and there is a green here. Now if you look at this 3 patterns together, it looks like a morning star pattern. If they are independent variables, and we have to check, yes, we have to, PCR अलग से देखना है, price अलग से देखना है, and we have to compare PCR with the price here. Exactly. So now you get even more conviction. Now you know RSI oversold, it has gone up, price lower close, PCR ideally it should have gone down, but PCR has gone up. And I see a very strong candle formation here as well. And now I see a morning star, and next day I see a follow-up move as well. Nifty consolidated, but then Nifty picked up from there. So these are the cases जब RSI एक overbought या oversold territory में है, तब तक साथ में आप अभी आप क्या देख सकते हो, आप पीसीआर भी देख सकते हो. एंड द सेम कॉन्सेप्ट कैन अप्लाई फॉर स्टॉक्स एज वेल. ओके, इट्स नॉट दैट वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स. स्टॉक्स के भी पीसीआर होते हैं. यू कैन इंडिविजुअल स्टॉक्स भी आप देख सकते हो, बट स्टॉक्स में पीसीआर उतना काम नहीं करता है जितना आपका इंडेक्स में करता है. So ideally you can use PCR for Nifty, Bank Nifty and Sensex here. Is this bullish divergence example clear, guys? If you can just give me a heads up in the chat box. समझ में आया ये bullish divergence हमें क्या देखना है? Okay. Now let us look at an example of a PCR bearish divergence. So there is one more example. So here you can see what has happened on the 24th and the 25th of March 2025. Now again you must be wondering, why did I select only 24 and 25? I could have selected this high, or I could have selected this, or I could have randomly selected this green candle, or I could have selected this green candle here, or I could have selected this green candle. But why specifically did I look at the 24th and the 25th of March closing here? Any particular reason that you see? Why did I look for reversals around this area? क्या लगता है क्या reason हो सकता है? Exactly. You can clearly see where the RSI was between 30 and 70. This was the time when RSI had gone above 70, and it had gone above 70 after a long time. I think after October, for quite some time, it had gone above 70 or yes, again. So now again, when RSI has gone into an overbought mode,
I think what you can also check along with that is start looking for some reversals. Start seeing what the PCR is also saying. Now, if I'm looking at 24th and 25th March, now 24th March close is this candle is 23,658, and next day my closing is around 23,669. So I can see from 658 to 669. So your the closing is on the higher side or the closing is on the lower side here? ओपन संगीता जी saying open interest किस साइड ज्यादा वॉल्यूम बन रहा है? I didn't get your question, संगीता जी. Okay, I'll try to answer your. ये बस एक example explain करने के बाद I'll take up your questions. But in the meantime, if you can answer, 24th March का close is 23,658 and 25th March का close is 23,669. So I can clearly see that एक higher highs बन रहा है. So the closing is on the higher side. So ideally आपका PCR क्या होना चाहिए? जब आपका closing ही एक higher side पे मिला है, भले ही अगले दिन वो लाल कैंडल मिला हो, but still the closing is higher than the previous day's close. Yeah, we can use PCR for Nifty, we can use it for Sensex, we can use it for Bank Nifty as well. Yeah, you can use 60/40 as well, Dinesh ji. I mean, I prefer using RSI 70/30 as default setting. 80/20 where you might not, yeah, 60/40 you might get a lot of signals, but you can do this relative comparison every day. It's not that ki RSI jab overbought oversold ho tabhi karna hai. I mean, that will just increase your odds of price moving in your favor, but you can do this relative comparison every day, every 2 days 3 days ka comparison aap kar sakte ho. So ideally now I'll show you what the PCR is. So you can see on the 24th of March, my PCR was around 1.13. But you can see on the 25th of March, the price has gone up. Ideally, PCR should have also gone up, like 1.13 से ये होना चाहिए था 1.14 या 1.15, but ये गिरकर आ गया 1.095. That means 1.10. So from 1.13, my PCR has dipped to 1.10. So price has gone up, but मेरा जो PCR है वो ऊपर नहीं गया, but PCR है जो कम आ गया. So इसको हम लोग बोल से आपका PCR negative divergence, and next day I've seen a lower close here as well. And at the same time, what is this candle formation, guys? If you can let me know in the chat box. And you can see this candle formation is also at the previous high here. अगर मैं ये वाला high को connect करूँ तो आप देख सकते हो ये जो previous resistance वाला area है वहीं पे आपको RSI overbought मिला है, आपको PCR negative divergence भी मिला है, आपका एक previous resistance भी है, and at the same time you can see there is an evening star candle formation as well. So this is how you look into it, rather than just looking at PCR in isolation. What are the factors here? RSI overbought, this candle formation exactly at its previous resistance, so that means this is acting as a good resistance level. Price is making a higher close, RSI उतना ऊपर जा नहीं रहा है, मतलब RSI is giving a lower close, and next day you get a evening star pattern as well. Evening star is a candlestick pattern. It's a 3 candlestick pattern, Rhythm ji. जहाँ पे there is one green candle, there is one red candle, and the third one is a red candle. It's like an inverted V shape, whereas morning star is a V shaped candle. We'll do a lot of webinars on candlestick patterns as well, so that you are well versed with that as well. और फिर हम वहां से देख सकते हैं कि वहां से एक करेक्शन हमें नजर आया है. Is the PCR part clear, guys? Understood the concept of PCR divergence? Pavel ji is asking, can it be used for intraday? Ideally, yes, you can also use it for intraday, but intraday में PCR reversals आपको spot करना थोड़ा challenging हो सकता है. Because ideally intraday basis में a lot of times from my experience I've seen PCR and price moving in tandem. Towards the end, 3:30 के बीच पे अगर प्राइस एक हायर हाई बना रहा है तो आप देख सकते हो कि वहां पे एक डाइवर्जेंस शायद आपको नजर आए. सो आप वो ट्रेडिंग टिक के वेबसाइट में जाके देयर यू कैन लुक फॉर दीज पीसीआर डाइवर्जेंस सिग्नल्स गाइस. आई थिंक दैट कैन बी अ गुड इनसाइट, बट इंट्राडे में यूज कर सकते हो. सी द कॉन्सेप्ट इज द सेम वेदर आप इंट्राडे में करो डिलीवरी में करो, बट आई प्रेफर डूइंग इट ऑन पोजिशनल बेसिस.
जस्ट टू आइडेंटिफाई कि ऐसा कौन सा लेवल हो सकता है दैट कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स. बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आरएसआई ओवरबॉट होके पीसीआर में नेगेटिव डाइवर्जेंस आने के बाद वो प्राइस गिरे ही. देर आर लॉट ऑफ सम ऑफ द टाइम्स हो सकता है कि इतना सब मिलने के बाद वो प्राइस रिवर्सल ना हो, ऊपर ही हो. तो उसके लिए हमें प्राइस एक्शन के लिए भी वेट करना पड़ेगा. वी हैव टू सी इफ द प्राइस इज ऑल्सो बिहेविंग इन द सेम मैनर along with the PCR here. Because see PCR and all ये जो ऑप्शन चेन है वो जो डेटा है वो थोड़ा सा लैगिंग है, बिकॉज अल्टीमेटली ये डेटा बनता कहाँ से है, प्राइस से ही बनता है. सो इट्स नॉट दैट डेटा के वजह से प्राइस बनता है, प्राइस के वजह से ये डेटा बनता है. सो व्हेन यू आर लुकिंग एट दीज डाइवर्जेंस, इट शुड बी सपोर्टेड बाय द प्राइस एक्शन एज वेल, चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चाहे वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट के वहां पर हो. So these are, you know, the things that you can look together in PCR. So that is how you look at PCR divergence to spot reversals. Clear? I hope the PCR divergence part is clear, guys. If you have any questions, you can let me know in the chat box. I'll be happy to, you know, answer your queries. How was the session? New topic. I think new way of looking at the markets. How relevant if I use line chart to spot divergence? Uh, Ideally, in line chart, you will only get the closing price, Dinesh ji. But in candlestick chart, you will get the high points and the low points as well. So, you know, prefer using a candlestick chart, you know, rather than a line chart. So I think candlestick chart can give you much better clarity as compared to line chart, because you can also look at candlestick patterns as well. Rhythm ji is saying thank you. 15 to 20 May RSI showing no sign. Okay, just a second. 15 to 20th May. Okay. मेरा I don't know for some reason मेरा trading view open नहीं हो रहा है यहाँ पे. Let me see if I'm able to open trading view. Okay. Yeah. Okay. Fine. Now I'm able. Which website do you use? So for PCR, I was looking at Trading Tick. So Trading Tick is the website that I was talking about. So tradingtick.com, if you go here, I think you can just log in using your ID. You can get the intraday PCR here, पवेल जी. यहाँ पे आप अगर लॉग इन करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे डेटा. चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ. लेट मी जस्ट साइन इन एंड सी. In the meantime, let me open Nifty and let me open RSI as well. So I don't have the historical PCR with me, Sachin ji. I don't know. There is. You're talking about 15 to 20th of May. This one you are saying, but I don't know what was the RSI here. For some reason, I'm not able to. Okay, let me just log in and see. Now we have three things to confirm. Yes, Sachin ji, we do have three things. So ideally, if you are not getting any RSI overbought and oversold in that area, Sachin ji, you can still, what you can do is you can still look for PCR diverge. Okay, now I have the RSI chart here. So this is what you are saying, 15. So ideally यहाँ पे जो RSI है वो 70 के ऊपर गया नहीं है. So this was the last time when the RSI had gone above 70. So ideally 14th May का PCR और 15th May का PCR आप देख सकते हो. बिकॉज यहाँ पे प्राइस तो क्लियरली एक हायर राइज बना है 24,667 से 25,062. आई डोंट हैव दैट हिस्टोरिकल प्राइस डेटा विद मी. अगर आपको हिस्टोरिकल पीसीआर मिलता है तो आप यू कैन सी वेदर देयर वाज एनी डाइवर्जेंस दैट वाज फॉर्म्ड हियर. इट वाज क्लोज टू 70 बट इट हैड नॉट गॉन अबाउ 70. बट अगर यहाँ पे अगर आप पीसीआर डाइवर्जेंस सिग्नल मिलता, बिकॉज वो 25,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी था निफ्टी के लिए. So, you know, you can probably check that as well. Good learning. If price is making double bottom and RSI is making higher low, is it a divergence? Price is making a double bottom, okay. And ideally,
you can still consider those cases, double bottom cases भी आप consider कर सकते हो. But ideally, if you get second low lower than the first low, I think that will be even better. Clear? But हाँ, you can थोड़ा सा मतलब आप डबल बॉटम को भी कंसिडर करके आप डाइवर्जेंस ढूंढ सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट नॉट डू इट एवरी टाइम. Ideally, second low should be lower than the first low, and RSI should be making a higher low here. That is when you should be looking at the divergence. ठीक है, so that was all from my end, guys. I hope the session was good. You learned something new, and see you tomorrow. So tomorrow again we'll meet at 12:30 for our mid market session. So 12:30 को मिलेंगे again on SBI Securities YouTube channel. And then next week again on Wednesday I'll be doing one session on ratio charts, कि आप sectors कैसे identify करते हो with the help of ratio charts. How do you identify outperforming sectors, underperforming sectors, और वो sectors मिलने के बाद वो sectors के आप stocks कैसे ढूंढते हो, which are the stocks that has potential to perform well. This is something that I'll cover in my mid-market webinars as well, but in the webinar that we are going to meet on next Wednesday, I'll actually tell you कि आप watch list पे कैसे आप ratio charts लगा सकते हो, how do you analyze that ratio charts daily, and how do you find stocks in the sectors that are outperforming or underperforming here. So those are the things that we will learn next Wednesday. And tomorrow, in the meantime, we'll meet tomorrow again at 12:30, guys, with a new set of for the mid-market session. And I hope to see you all there as well. Dinesh ji is saying, please do one session on how to read option chain. Yeah, Dinesh ji, we'll do one session on option chain as well. Actually, last Wednesday के webinar में मैंने उसके बारे में बात तो किया था कि आप बेसिक वाई एनालिसिस कैसे करते हैं, बट वील डू वन सेशन ऑन ऑप्शन चेन रीडिंग एज वेल. ठीक है, चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, गाइस. हैव अ प्रॉफिटेबल trading day ahead in the next couple of days. So tomorrow we have the Nifty weekly expiry, and we'll meet tomorrow at 12:30 for our mid market session. Bye, guys. Take care and stay safe.